चाहिए खाने पीने के लिए, साल महीने के लिए खाने पीने के लिए, कितने पैसे चाहिए आखिर जीने के लिए, लोग दीवाना है यू इस पैसे पे मरता है, फिर ना कहना माइकल दारू पी के दंग करता है। हाउ जो साहेबा ला 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 ला। साल महीने के लिए खाने पीने के लिए कितने पैसे चाहिए आखिर जीने के लिए, लोग दीवाना है तो यू इस पैसे पे मरता है, फिर ना कहना माइकल दारू पीकर दंगा करता है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय किशोर कुमार and acted by the legendary actor Pran. So, dear friends, hello, namaskar, sat sri akal, vanakkam, salam. It is the month of February and it is the month of budget. So, we have to talk about the budget. So, today's episode will be a bit of bilingual. It will be in Hindi as well as in English. Hindi, because many of the audience, many of the students requested me to make the video in Hindi. Actually, my Hindi is not that much of good, but still I will try. कि अगर लोग बना रहा है तो हम क्यों पीछे रहे, ऐसे भी हमें पीछे रहने का आदत नहीं है, क्योंकि हम जहाँ पे खड़ा होता है लाइन वहाँ से शुरू होता है। सॉरी, डायलॉग बहुत ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। अरे अगर बोल दिया तो देख लेंगे बेड़ू, फिर डायलॉग हो गया, कोई बात नहीं। सो today we are going to discuss about budget. Actually, in common parlance, budget means it is the estimated income and expenditure for a certain period of time. Estimated income and expenditure. Estimated income and expenditure for a certain period of time or a given period of time. It is a flow concept. Those who used to study economics, they you know that what is flow concept means when something is measured for a particular period of time. So that is. So in this way we are going to discuss about the government budget. Now, government budget, yes, there is a difference between these two. Government budget, that is, so government budget, it is the there is a difference what I am talking about. There is a difference between government budget and private budget. For the private budget, first income is decided and then expenditure. It means that cut your coat according to cloth. By the way, today I am wearing coat. And in case of government budget, first expenditure is decided, then income. अरे भाई गवर्नमेंट का बात है, पैसा थोड़ी गवर्नमेंट के जेब से देगा, मतलब जो लोग गवर्नमेंट में है वो अपने जेब से थोड़ी देगा, लोगों से उठा के तो देगा, इसलिए फर्स्ट एक्सपेंडिचर इज डिसाइडेड देन इनकम. सो अगेन आई रिपीट, गवर्नमेंट बजट, it is the estimated income and expenditure of a certain period of time, and that period is starts from April 1st of this year to 31st March of next year, or it is called financial year, it calls accounting year, it calls fiscal year, all bearing the same meaning. Means financial year, fiscal year, accounting year, the same thing. Means in case of our country, it starts from April 1st of this year to 31st March of next year. So as I am talking about, it is the budget, it is the budget month. Earlier the budget was declared at the last day of the February. It would be very nice now, because this year the leap year, so it would be 29th February. But when this NDA government came into power in 2014, they started to declare the budget on the first day of February. Actually, it personally hurts me, because since my school days, since my college days, even university days, I used to know that the budget declared the last day of February, but the chance. खैर कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ. So now let's discuss about the budgets and its components of the budget. Exactly, I'm just going to tell you about the technicality of the budget, and I'm not going to tell you what the budget, how the budget happens for this year 24-25 or 23-24, what government make taxes over, how government is increasing the expenditure or decreasing the expenditure, स्कॉलरशिप का पैसा बढ़ाया या घटाया, जो भी हुआ है उसके बारे में बात नहीं करूंगा, वो आपके सामने रहेगा. मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि बजट होता क्या है और किस तरह से बजट में खर्चा या इनकम किया जाता है.
and it is very common thing that everybody must know, because to be a citizen in a democratic country itself is a responsibility. So we have to be responsible. Many times I used to say that in a democratic country, especially in a parliamentary democratic country, every citizen must have a basic knowledge about public finance as well as public administration. Otherwise, all the dishonest politician will make you fool. So that is why basic knowledge you must have. So the definition of budget that I said. Now I'm going to discuss about the components of budget. You can see here, see, this is the government budget. Okay, the government budget, first is the budget receipts, then comes the budget expenditure. Budget receipts means budget income. So we have to talk about how government receive the money from the people. So the budget receipts, there is a revenue receipt and there is a capital receipt. Now what is revenue receipts? What do you mean by revenue receipts? Actually, revenue receipt means it is the receipts of the government which doesn't create any liability of the government nor reduce any assets of the government. I repeat, revenue receipt is the receipts which doesn't create any liability nor reduce any asset. For example, if I go to the example that you can say tax. Tax is the revenue receipt. So now you see, in if government imposes tax, you have to pay the tax. If you go to the definition of tax, if I ask you what is the definition of tax, actually tax is a compulsory receipt imposed by the government on its citizen. In return, government doesn't provide any special service to the taxpayer. So it is a compulsory receipt, or it is a compulsory payment for the citizen of the country, and in return government doesn't provide any kind of special or direct benefit to the taxpayer. For example, I am giving tax only 1000 per year and you are giving tax 1 lakh per year. So as you are giving 1 lakh rupees of 1 lakh as a tax, तो क्या होगा, 1 लाख रुपया तुम दे रहे हो और मैं सिर्फ 1000 रुपये दे रहा हूं. अभी टैक्स का जो स्लैब है उसके ऊपर दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज बात कर रहा हूं कि देखो तुम 1 लाख रुपए दे रहे हो, यू आर गिविंग 1 लाख ऑफ रुपीज एज अ टैक्स एंड आई एम गिविंग 1000. बट थिंग इज दैट the road which is constructed by the government, you will, what is the road that you will use, the same road I will be also using. Means आपके लिए, for you, the government is not going to make a better road that you are a high taxpayer. The things will be common for all. So that is tax. But you must pay tax, I must pay tax. If you are in the country, as per the rule, as per the regulation, as per the law, everybody must pay the tax as per their capability, because there is a slave wise tax as per your income or as per your expenditure. There is a different thing we will discuss. So now, as I am paying the tax or you are paying the tax, and in return we are not getting any direct benefit, so it is not the liability. Means government is getting money from us, government is getting money from us, but in return government is no, it doesn't create any liability to the government. Means government need not to pay direct promise to the taxpayer. Means government will make promise in the budget or while fighting the election, in the election campaign, that is different thing. But while taking the tax, government is not going to give you the direct benefit. So it doesn't create any liability. So another thing is that it does not reduce any asset. Means government is not selling anything. Government is not selling, its property and getting the money. So that is why it is, called revenue receipts, which doesn't create any liability nor reduces any assets. So it is a government's, you can say that it is a government's own money type. This is one, that is tax revenue, that is revenue receipts. And the revenue receipts, there is a tax revenue and there is a non-tax revenue. Achha. In the tax revenue, there are two types of tax. One is direct tax, another is indirect tax. Now, direct tax is that tax whose impact and incidence falls upon same person.
मतलब जिसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाया गया है उसको ही टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स से बच नहीं सकता है, वो टैक्स का बर्डन किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता, उसको ही देना पड़ेगा। मीन्स he or she cannot, convert it or shift it to anybody else. For example, income tax, wealth tax, corporation tax. Now whatever your income, अगर आपका इनकम जितना है उसके हिसाब से जोन जिस टैक्स स्लैब में आप आते हो उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा, और आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, वो आपके ऊपर पड़ा है। द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन योर पर्सन। डायरेक्ट टैक्स लग गया, इनकम टैक्स लग गया तो देना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। सो दैट इज अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज द टैक्स हुज इम्पैक्ट falls on one person, incidence falls on another person. For example, sale tax. Earlier to many taxes were there: sale tax, excise duty, value added tax, many. But nowadays it is just compact into one tax, that is GST, goods and service tax. ना उसमें भी दो तीन तरीके हो गए, अभी जो हो गया वो बाद में बात करेंगे। जो वन नेशन वन टैक्स का बात था अभी तो हुआ नहीं, क्योंकि देर आर मेनी प्रॉब्लम। एक्चुअली वी हैव a lot of infrastructure problem. ये idea was conceived by our earlier prime minister, the great economist. Actually I give him more weightage as an economist. He's a great economist and he conceived that idea that we should make one nation one tax. So okay sir, छोड़ देती है इस बात को, क्योंकि हमेशा हम उस टैक्स की तरफ जाते हैं। टैक्स के ऊपर एक अगला वीडियो आ जाएगा, लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स का, whose impact falls on one person and incident goes to another person. So, means suppose sale tax. The government imposes taxes on the producer as a sale tax. Now, what the seller or the producer will do? He will increase the price. What amount tax is imposed by the government, he will increase the price on that commodity. And the person who will buy, the consumer who will buy, he or she will pay the tax. So that is indirect tax. Now, another one is that non-tax revenue. That is also a kind of revenue receipts which doesn't create any liability nor reduce any assets. For example, fees. So if government imposes fees or fix a fees, अभी गवर्नमेंट ने फीस लगाया, क्या है बोले, गवर्नमेंट अस्पताल जो है उसमें जाओगे तो 5 रुपये फीस देना पड़ता है, या गवर्नमेंट पार्क में जाना है तो 5 रुपये फीस देना पड़ता है। अभी 5 रुपये का टिकट तुमने काट लिया तो तुम एंट्री कर सकते हो, अगर नहीं कटा तो नहीं जा सकते। So as you bought the ticket of ₹5, means you are giving money to the government, तो government will directly give you the benefit. अभी कोर्ट फीस जो है, अभी जो तुम स्टैम्प पेपर खरीदते हो, कार्टिज पेपर खरीदते हो, तो अब कार्टिज पेपर में कोई एग्रीमेंट लिख के रखोगे तभी तो आगे जाके अगर कोई प्रॉब्लम होगा, if there is a problem arise in future, the government will stand by you, the government will give you the justice because you have paid the money to the government. That court fee you has given, the park entry fee you have given, so direct benefit you are getting. Fines also. So sometimes if you just move your car or bike in the no entry area, क्या करोगे, फाइन लग जाएगा, तो you have to pay the fine. That direct money will go to the hand of the government. It also doesn't create any liability nor reduce any assets of the government. Like again अब penalty, अभी penalty भी हो सकता है। अभी तुम गवर्नमेंट इसमें काम कर रहे हो तो वहाँ पे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कोई चीज सामान तोड़ दिया, you just broken some articles there, so for that government will put penalty on you. And there are many penalties also if you mislead, if you do something which are against the rules, then government used to put penalty on you. That penalty may also directly goes to the hand of the government and it doesn't create any liability to the government or never reduce any assets of the government. So that is होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, बहुत अच्छा होता है। दूसरे बात में आओ, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट इज दैट रिसिप्ट्स which creates liability as well as reduces the asset of the government. For example, देखो borrowing, अगर गवर्नमेंट बोरो किया, गवर्नमेंट कैन बोरो from international organization, government can borrow from foreign countries, government can borrow from companies, government can borrow from the reserve bank, government can borrow from the public also. So as government will borrow, accordingly government has to pay the rate of interest.
It is a liability. Or one day, government has to repay the entire loan. So that is why it creates liability. Another one, disinvestment. Disinvestment is a very commonly used word after 1991 when the new economic policy was introduced. Then Narasimha Rao government and Manmohan Singh was the finance minister at that time. So after that, when uh, when the government used to sell the shares of the government sector industries to the private, means selling the shares of the government company to the private is called disinvestment. अभी देखो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के शेयर्स, गवर्नमेंट की कंपनी है, उसका कुछ शेयर प्राइवेट में बेच दिया, तो शेयर तो गवर्नमेंट का एसेट ही था ना, अभी उसको सेल कर दिया तो गवर्नमेंट का एसेट रिडक्शन हो गया, तो ये कैपिटल रिसिप्ट होता है. और एक होता है रिकवरी ऑफ लोन. अभी गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया और लोन का सारा पैसा अभी रिकवर हो गया, दैट इज ऑल्सो रिडक्शन ऑफ एसेट्स. कभी कभी ऐसा लगता है ना, अरे ये कैसे होगा, पैसा तो आ गया, एसेट हो गया. ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया तो लोन के अगेंस्ट में तो गवर्नमेंट का हर महीने इंटरेस्ट भी मिल रहा था, अभी सारा पैसा उसने लौटा दिया, अभी तो ही और शी इज नॉट गेटिंग द इंटरेस्ट एवरी मंथ. अर्लियर इट वर्कड एज एन एसेट because he had given it to the somebody as a loan, and that loan is generating money to the government. Now if there is a recovery of the loan, means revenue to government के हाथ में आ गया, but it reduces the asset of the government. So these are the budget receipts that I talked about, that revenue receipts and capital receipt. Again I repeat, revenue receipt is that receipt which doesn't create any liability nor reduce any assets for tax, fines, fees, penalties, all this. And capital receipt is that receipt which creates liability and reduces asset. अभी देखो सेंट्रल जो यूनियन बजट होता है या तो स्टेट लेवल बजट होता है, तो अगर गवर्नमेंट ने बोरो किया, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट लाइबिलिटी क्लियर कर रहा है, मतलब क्रिएट कर रहा है. As government is borrowing, government is creating the liability because government is borrowing, government has to pay. Means government क्या, हमको ही देना पड़ेगा, गवर्नमेंट किसका है, हमारा ही है, तो गवर्नमेंट ने बोरो किया, we have to retain it as a liability. As well as गवर्नमेंट जो डिसइन्वेस्टमेंट करता है, डिसइन्वेस्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसइन्वेस्ट करते करते अभी तो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट खत्म ही हो रहा है. जितने सारे हमारा कंपनीज है, सारे कंपनीज का शेयर तो अभी बेच ही रहा है प्राइवेट में. सो एंड द गवर्नमेंट इज गेटिंग मनी, and that money government is using for development and another, whatever. We are coming to the next. And disinvestment and recovery of loan. So this is the budget receipt, this side, left hand side. Now you come to the budget expenditure. Now budget expenditure में क्या होता है, पहला होता है revenue and capital expenditure. First let's come to the revenue expenditure. Revenue expenditure का मतलब होता है, it is that expenditure which doesn't reduce any liability nor creates any asset. ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं ना, ये ऐसा एक्सपेंडिचर है तुम्हारा लाइबिलिटी भी खत्म नहीं करेगा, तुम्हारा कोई एसेट भी क्रिएट नहीं करेगा. अब एग्जांपल बताऊं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो सैलरी देता है ना, वही होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अभी इस महीने दिया, नेक्स्ट महीने दिया, नेक्स्ट महीने दिया, उसके बाद दिया, उसके बाद दिया, उसके बाद दिया, उसके बाद रिटायरमेंट हो गया तो अभी पेंशन देना शुरू कर दिया, तो लाइबिलिटी खत्म नहीं होता है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और कोई एसेट भी क्रिएट नहीं होता है. अभी किसी को जैसे सैलरी देके रखा है तो उस सारे व्यक्ति जो है उसको तो खरीद के नहीं ला सकते ना, he or she may leave the job sometime, it is their wish. So it doesn't reduce any liability nor creates any assets. Now come to the capital expenditure. अभी ये क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता है, देखो, it reduces liability and creates assets. How? See, when government repay the loan, it means that it reduces the liability. Or when government makes a hospital, river dam, highway, all these things will create the asset to the government. Another one is that development expenditure and non-development expenditure. तो गवर्नमेंट यूज टू डू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. अभी जो मैंने बताया, अभी ब्रिज बनाया, हाईवे बनाया, पीडब्ल्यूडी बनाया, हॉस्पिटल बनाया,
सारे चीज गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है, तो उसको बोलता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। फॉर दैट गवर्नमेंट यूज्ड टू मेक द एक्सपेंडिचर। एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो क्या होता है? देखो, देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर which doesn't create any development but is very essential. For example, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस चाहिए, पुलिस के ऊपर एक्सपेंडिचर। अभी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हमको क्या चाहिए? आर्मी चाहिए, सीआरपीएफ चाहिए, न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए, तो ये सब बहुत महंगा होता है। न्यूक्लियर टेस्ट तो 1-2 साल का पूरा नेशनल इनकम ही खत्म हो जाता है, इतना खर्चा आता है, तो ये सब करना पड़ता है। दिस आर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट कम टू द प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अभी प्लान एक्सपेंडिचर जो होता है व्हिच आर अंडर द प्लान। एक्चुअली अर्लियर वी हैड अ 5 ईयर प्लान, बट फिर ये एंटी गवर्नमेंट आके उसको क्या नीति आयोग बना दिया। तो प्लानिंग कमीशन वाज अर्लियर वी हैड, so it is very nice. Actually they should not change the, I should forget about whether they may change or not. So that is planning commission, sorry, the plan expenditure means which are proper plan. This coming 1 year or 2 year, 3 year or coming 5 years will make this kind of expenditure, that comes under plan. And then there was non-plan expenditure. Many times government used to keep a huge amount of money or a certain amount of money to meet the unforeseen needs or problems of the nation. So all these are the expenditure. So this is how the government budget and its components we can describe. That is budget receipt and the budget expenditure. In the budget receipt you got revenue receipt, capital receipt. In the budget expenditure you got revenue and capital expenditure, development and non-development expenditure, and plan and non-plan expenditure. So today's video is going to be a bit longer because we have to cover up the another sections to, that is that we have to very commonly pronounced that we have to know the budget deficit जो हमारा देश में हमेशा होता रहता है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। Okay, now we are coming to the next section of the budget, that budget deficit. Actually, what happened? The budgets are of 3 types. One is balanced budget, when government income is equal to the government expenditure. Another one is surplus budget, when government income is more than government expenditure. Another one is deficit budget, when government income is less than budget expenditure. Now guess हमारे देश के लिए क्या होता है? हाँ, अभी 75 ईयर से तो हमारा डेफिसिट बजट ही हो रहा है। ऐसा कौन दिन आएगा जब हमारा विल गेट ए सरप्लस और बैलेंस बजट? Actually this is the question. The most important thing is that our country is developing. In each and every developing country, always they used to make a deficit budget. Means when budget expenditure is more than budget receipt. मतलब अगर हम सीधी बात में बोले तो जब गवर्नमेंट का इनकम से ज्यादा उसका खर्चा हो जाता है तो उसको डेफिसिट बजट बोलता है। तो हर साल तो हमारा डेफिसिट बजट ही हो रहा है, एवरी ईयर वी आर हैविंग द डेफिसिट बजट। तो उस डेफिसिट के ऊपर हम तरफ बात करते हैं। एक्चुअली बजट डेफिसिट को हम 3 हिस्सों में गवर्नमेंट बढ़ता है। एक होता है फिस्कल डेफिसिट, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। ना फिस्कल डेफिसिट होता है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने पहले बताया, माइनस द टोटल रिसीव्स, जो रेवेन्यू रिसिप्ट एज वेल एज कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग। अभी बोरोइंग के लिए जो उधार करके लाया उसको छोड़ के हमारा जितना रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट होता है वो माइनस करना पड़ता है टोटल एक्सपेंडिचर से। अभी साल का बजट में कितना डेफिसिट है आप लोग देख लेना, उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकलिटी ऑफ द बजट। सो नाउ व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस? व्हाई वी हैव टू नो द fiscal deficit? Because it gives us the overall picture that how much money falls short for the government to carry out its expenses for this next financial year, accounting year or fiscal year. Now come to the revenue deficit. So revenue deficit, it is the equal to revenue expenditure minus revenue receipt. Now revenue expenditure क्या होता है? That I told. And revenue receipt क्या था? That I told. मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू डेफिसिट को अगर माइनस कर दो तो हो जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिट? ये सेपरेटली क्यों दिखाना पड़ता है और हर लोग को देखना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज होता है।
क्योंकि देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, इट इज दैट एक्सपेंडिचर व्हिच डजंट reduce any liability nor creates any asset. और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, which doesn't create any liability nor makes any asset. अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैंने एग्जांपल में बताया कि गवर्नमेंट सैलरी जो देता है और बाकी सारे जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है. और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, एक्चुअली रेवेन्यू रिसिप्ट इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री. तुम्हारा टैक्स और नॉन टैक्स से जितना पैसा गवर्नमेंट के हाथ में आता है, अभी वो अगर कम हो गया तो उससे हमारा औकात पता चलता है कि हम कौन सा जगह पर हम खड़ा है. अगर यहाँ पे डेफिसिट हो गया तो द गवर्नमेंट इज इन वेरी ट्रबल व्हेन देयर इज ए हाई रेवेन्यू डेफिसिट. तो एवरीबॉडी मस्ट नो व्हेन गवर्नमेंट डिक्लेयर द बजट वी शुड नो दैट रेवेन्यू डेफिसिट कितना दिखा है. क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट अगर हो गया तो ये बहुत गड़बड़ी मतलब हो रहा है, क्योंकि टैक्स का पैसा नहीं आ रहा है, नॉन टैक्स का भी जितना पैसा नहीं आ रहा है उससे गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रहा है. अभी गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करने के लिए, क्योंकि देखो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो एक तरफ दो चीज के लिए होता है. एक तो गवर्नमेंट कभी मजबूर हो जाता है कि लोग को नौकरी देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करना पड़ता है, जो लोग मांगता है उसके लिए धरना देता है, प्ले खट लेके था हमारे मांगे पूरी करो, ये सब होता है. दिस इज वन थिंग. अनदर थिंग दैट मेनी टाइम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्नमेंट ट्राई टू मेक सम पॉपुलर, हम इतना 2 लाख 3 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ नौकरी देंगे, तो उसके लिए वो एक्सपेंडिचर करता है. तो उसको देखने पर ये अगर ये रेवेन्यू डेफिसिट अगर बहुत ज्यादा हो गया तो द कंट्री विल बी इन ट्रबल. मेनी टाइम्स इट यूज्ड टू गो टू द डिफॉल्ट आल्सो. नाउ कम टू द प्राइमरी डेफिसिट. अभी प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इसमें जो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, मतलब फिस्कल डेफिसिट जितना हुआ उससे गवर्नमेंट साल भर में गवर्नमेंट ने जो लोन लिया उसके लिए जो पैसा देना पड़ता है, कितना दे रहा है उसको निकालना पड़ता है. तो व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ दैट, हमको ये जानना जरूरी क्यों है, हमको ये जानना जरूरी है कि हम इंटरेस्ट के नाम पर हवा में कितना पैसा उड़ा रहा है. ऐसा है ना, क्योंकि देखो इंटरेस्ट के नाम में जो पैसा दे रहे हो, इंटरेस्ट ही दे रहे हो, वो पैसा तो अपना नहीं हो रहा है. जैसे तुम भाड़े के घर में हो, अभी भाड़े के घर में भाड़ा दे रहे हो 10 साल 15 साल दे रहे हो, और क्या घर तो तुम्हारा नहीं होगा ना. तो बात यही होता है कि हाउ मच मनी वी हैव टू पे इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट ऑल्सो कैरिड आउट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द बजट with a technical skills, then only you will understand. अभी उसका प्राइस बढ़ाया, उसका घटाया, उसमें इतना टैक्स लगाया, इसमें ये क्या वो क्या, वो सब बकवास छोड़ के वी मस्ट नो एग्जैक्टली दैट बजट में हो रहा है क्या, इसमें रिसिप्ट कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, कैपिटल रिसिप्ट कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, और ये जो डेफिसिट है वॉट एवर डेफिसिट इज गोइंग ऑन दैट ऑल्सो वी मस्ट नो, बिकॉज अल्टीमेटली पैसा तो हमको ही भरना पड़ेगा. हाँ है कि नहीं, ये पैसा हमको ही भरना पड़ेगा. तो उसके लिए ये चीजें एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करना पड़ेगा, या तो कभी कभी बाबा भी देना पड़ेगा, क्योंकि इफ एनी बजट टचेस एवरीबॉडी, एवरी मीन्स every section of the society, because in every society there are different classes according to their financial attainment, और तो होना ही और होगा, ये नेचुरल है. अभी कार्ल मार्क्स ने जो कहा था कि देयर शुड बी अ क्लासलेस सोसाइटी, समटाइम ये थोड़ा मिथ लगता है, फिक्शियस लगता है कि होगा नहीं, रहेगा, लेकिन हम ये चाहता है कि देखो भाई क्लास तो होगा, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि कोई BMW चला रहा है और कोई लोग भूखा फुटपाथ में सोया रहता है. तो बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो फार माई नॉलेज जितना हो सके मैंने थोड़ा आसान करके ये टेक्निकलिटी आपके सामने रख रहा हूँ और रखा हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. और इस वीडियो को देखना थोड़ा लंबा हो गया, फिर भी इस वीडियो को देखना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना. प्लीज प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट, एंड प्लीज your subscription, your comment, your like used to give me more boost to me, that I used to get more induced to make more videos that will be helpful for everybody. So for that, okay, goodbye, thank you, love you all.